So let us start the session. Today we are going to start session number 1 of chapter number 2, whole numbers. So we have already studied the counting numbers in the first session, that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, so on. The name of the counting number was natural number. Okay, so we should also know about the digit 0. Right, we have learned about counting numbers or natural numbers, that is 1, 2, 3 in the previous chapter, that is knowing our numbers. And we should also know about the digit 0, because 0 is also used as a number to count the number of objects in a collection. Suppose there is no object, तो हम लोग को काउंट करने के लिए कहा जाए, so how we will write the number? We will say 0. So 0 is also required here. So 0 is also used as a number to count the number of objects in a collection having no object. So all the natural numbers along with 0 will form of whole numbers. So this is the definition of whole numbers. ध्यान से देखो, the natural numbers along with 0 form a collection of numbers called whole numbers. So what is the difference between natural numbers and whole numbers? 0. सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस है. ओके, सो thus collection of whole numbers is 0, 1, 2, 3 and so on. So now we are moving towards the next topic, predecessor. So predecessor of a given natural number is the number obtained by subtracting 1 from the given number. अगर हम लोग जो भी नंबर दिया हुआ है उसमें अगर -1 करते हैं तो हम लोग को उस नंबर का प्रीडेसेसर मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, सपोज 25. व्हाट इज द प्रीडेसेसर ऑफ 25? ऐश्वर्या, प्रीडेसेसर ऑफ 25 क्या करना है? उसमें -1 करना है. भूमिका, रितिका रेड्डी, Yes, sir. what is the predecessor of 25? You have to subtract 1. What you will get? 25 minus 1 कितना मिलेगा? 24. Very good. So predecessor of 25 is 25 minus 1 is equals to 24. So another example, the number 16 comes before 17. So we say that 16 is the predecessor of 17, or 17 minus 1 16 होता है. Okay, and what is the predecessor of 20? Roshni, Sir. what is the predecessor of 20? 19. Very good. क्या करेंगे हम लोग? 20 minus 1 करेंगे, so 19. The number 1 has no predecessor in the collection of natural number. Natural number में सबसे फर्स्ट नंबर हम लोग 1 लिखते हैं. So whether we have the predecessor of 1 in natural number? श्राव्या, No, sir. नेचुरल नंबर में हम लोग 1 से ही स्टार्ट करते हैं, जो काउंटिंग नंबर्स हैं. तो 1 से पहले कोई भी नंबर नहीं है. सो दैट मीन्स द नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर इन द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर. वेदर दिस पॉइंट इज क्लियर, दिस वन? Yes, sir. Yes. Okay, fine. However, when we are talking about whole number, what is the predecessor of 1? Sir, 1. 0. Very good. However, 0 is the predecessor of 1 in the collection of whole numbers. But what about 0 in whole numbers? Sir, Again- -1. Wait, -1 whole number में नहीं होता है. Again, 0 has no predecessor in the collection of whole number. So these Yes, 3 sir. points you have to keep in your mind. सबसे पहले, number 1 has no predecessor in the collection of natural number. 0 is the predecessor of 1 in the collection of whole number, and 0 has no predecessor in the collection of whole numbers. Okay, now we are moving toward the next topic, successor. Successor हम लोग को कैसे मिलेगा? By it will be obtained by adding 1 from the given number, okay, to the given number. So successor of a given natural number
is the number obtained by adding 1 to the given number. For example, we are consider one number 25. So what is the successor of 25? Sarnika, Sir? what is the successor of 25? Sir, 26. Very good. So we have to add 1. So successor of 25 is 25 plus 1, that is 26. Okay. So now let us move towards some questions. First question, can all natural numbers be called whole numbers? Aditya, whether all natural numbers, क्या सभी natural numbers को हम लोग whole numbers बोल सकते हैं? Yes, sir. Yes, correct. All natural numbers are whole numbers. Now next question, can all whole numbers be called natural numbers? Wait, I will ask to Suswara. Can all whole number be called a natural number? All means complete, full. Answer is no. Why? Because 0 is not a natural number. Whole number में एक number होता है 0 जो कि natural number नहीं होता है. Right? Now next, third question. Which whole number is not a natural number? 0. Yes. The whole number 0 is not a natural number. Right? Number. Next question. मैं पूछूंगा एक मिनट किससे, दामोदर. What is the successor of 2,53,658? Sir. उसमें क्या करेंगे? What we have to do? We have to add Plus 1. Add. Plus 1. Add plus 1. Damodar, only Damodar should answer the question. Yes, sir. Answer. Sir, we have to add plus 1. Yes. Final answer. Sir, can I answer this question? Sir, can I? Wait. So we got 2,53,659. Okay, this is the final answer. Yes, sir. All of you mute your mic. Okay. Now next question, what is the predecessor of 89,800? So this question for Sheikh Mohammed, what we have to do? Sir, minus 1. Very good. Minus 1. What will be the final answer? 89,799. Very good. 89,799. Okay. Now we are moving towards, try this page number 28. So first question is, write the predecessor and successor of 19, 1,997, 12,000, 49 or 1 lakh. Okay. So question 2, Geetam, what is the predecessor of 19? 18. 18. जितना क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसी का आंसर दो. Next question, Virat, what is the successor of 19? Sir, successor of 19 is 20. Very good. Successor of 19 is 19 plus 1, that is 20. Okay. Harshvardhan, what is the predecessor of 1,997? What is the predecessor? Predecessor. No. Nihal, what is the predecessor of 1,997? 1,996. minus 1 करेंगे. Okay. Next question to Rian. Successor of 1,997. Sir, can I? मैं जिससे पूछ रहा हूँ वही आंसर देगा. 1,997. What is the successor? Shrestana, Yes, sir. what is the successor of 1,997? Sir, 1,998. Very good. We have to add 1. Right. Now next question to Muthu Prabha. What is the predecessor of 12,000? Sir? What is the predecessor of 12,000? Aditya, 11,999.
Okay, very good. 11,999. Next question. Muthu Prabha, what is the successor of 12,000? Sir, 1201. 12,000, 1,200 नहीं है वो. 12,101. Hey, 101 क्यों? Only one we have to add. 12,001. Okay, only one we have to add. Right. Now next question. Jennifer, what is the predecessor of 49? Sir, 48. Very good. 48. -1 करेंगे. Clemency, what is the successor of 49? 40. 50. 50. Very good. 49 plus 1. Okay, next question. Damodar, Sir. what is the predecessor of 1 lakh? Sir, can I? हाँ बोलो चलो. Sir, predecessor. Sir, Predecessor, yes. 99,999. Okay, very good. Now what is the successor of 1 lakh? एक मिनट. Shravya, what is the successor of 1 lakh? Sir, What is the successor of 1 lakh? 1 lakh. 1. 1 lakh 1, right. So predecessor is 99,999 and successor is 1 lakh 1. Okay, now next question. Is there any natural number that has no predecessor? Yes, sir. Which one? Sir, 1. Very good. So natural number 1 has no predecessor. Next question. Is there any natural number which has no successor? No, sir. No, No, sir. there is no any natural number which has no successor. Is there a last natural number? No, No, sir. there is no last natural number. Okay, so now predecessor and successor topic is over. Now we are moving towards the next topic, number line. So number line के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखो. First we will draw a line and we will mark a point O और उसको लेबल कर लेंगे 0 से. उसके बाद सेकेंड पॉइंट उसके राइट साइड में लेबल 1 करेंगे. देन द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 1 is called unit distance, and the same distance we have to maintain for marking the other numbers on the right side, 2, 3, 4, like that. Okay, in this way we will go on labeling points at a unit distance 2, 3, 4, 5 on the line, and we will get this number line, and this line is called the number line for the whole numbers. I repeat it again. पहले हम लोग एक पॉइंट मार्क करेंगे O से, कैपिटल O, और इसको 0 लिख लेंगे. फिर इसके राइट साइड में हम लोग 1 मार्क करेंगे, और ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज यूनिट डिस्टेंस, एंड वी विल मार्क दिस डिस्टेंस अगेन from 1 to right hand side, this one. So this is 2. Like that we will mark 2, 3, 4, 5, 6, so on. And this line is nothing but this is number line for the whole numbers. अगर हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे इस लाइन को, तो that will be number line for natural number. फिलहाल हम लोग नंबर लाइन पढ़ रहे हैं whole numbers के लिए. Okay, and the questions based on number line are very good and interesting also, and you have to do it on activity book. Okay, क्लास वर्क में भी करना है और एक्टिविटी बुक में भी करना है. तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, we can compare the two numbers. So first application of number line is comparing numbers on the number line. अगर कोई दो नंबर है, if suppose two numbers are there, right, और जो one number is right of the other number, तो राइट साइड में जो नंबर है वो बड़ा नंबर होगा, लेफ्ट साइड का नंबर छोटा होगा. ओके, सो द नंबर ऑन द राइट ऑफ ए गिवन नंबर, a number on the right of a given number on the number line is greater than the given number. अगर वही लेफ्ट साइड होगा तो it will be less than the given number. ओके, तो ऐसे हम लोग कंपेयर करेंगे. सी दिस नंबर लाइन, सपोज वी आर कंपेयरिंग 4 and 10.
तो 4 के राइट साइड में है कि 10 लेफ्ट साइड में है? 10 इज ऑन द राइट साइड, राइट साइड में है ना, so that is why 10 is greater than 4. Now if suppose we are taking two numbers 6 and 3, so 6 के लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में? 3 लेफ्ट साइड सर, Okay. राइट साइड में है। वेट सो जो 6 जो है वो 3 जो है वो 6 से छोटा होगा। इज दैट क्लियर? सो ऐसे हम लोग कंपेयर करेंगे। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। सपोज वी आर टेकिंग टू नंबर्स 11 एंड 6। अभी 11 6 के राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में है? सर राइट साइड। राइट साइड। तो 11 इज ग्रेटर दैन 6। कंसिडर अदर टू नंबर्स 4 and 7. Now 4 is left or right side of 7? सर लेफ्ट साइड। Left side. So 4 7 से छोटा होगा। Now take consider another two numbers 5 and 8. See, 5 is here, 8 is here. Now 5 is left of 8 or right of 8? सर राइट, लेफ्ट ऑफ 8। Left. So 5 is less than 8. Okay, like that we can compare the two numbers on the number line. Okay, now we are moving toward the next topic, addition on the number line. So हम लोग addition कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। Addition of number line can be shown, numbers can be shown on the number line. Let us see the addition of 3 and 4. तो सबसे पहले हम लोग number line draw करेंगे। So first number कौन सा है इसमें? Which is the first number? 3. तो जब हम लोग ऐड करेंगे होल नंबर में तो हम लोग राइट साइड मूव करेंगे। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 3. ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम 3 एंड सिंस वी आर एडिंग 4 टू दिस नंबर, सो वी मेक हाउ मेनी जंप्स? 4 jumps. यस सर। Right, 4 jumps to the right, from 3 to 4, from 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7. अभी देखो जंप कर रहे हैं, देखो फर्स्ट वाला, दिस इज द फर्स्ट जंप, दिस इज द सेकेंड जंप, दिस इज द थर्ड जंप, दिस इज द फोर्थ जंप। सो लास्ट में हम लोग कहाँ पहुँचे? फोर्थ जंप पे। द सम ऑफ 3 and 4 is 7, that is 3 plus 4 is equals to 7. So this is the addition on the number line. Now we are going to see the subtraction on the number line. ठीक है, तो subtraction of two whole numbers can also be shown on the number line. So let us find 7 minus 5. So first of all we will draw the number line and we'll start from 7 because first number is 7. Okay, first number is 7, so we'll start from 7. And क्योंकि 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए सब्ट्रैक्शन के लिए लेफ्ट साइड मूव करेंगे और एडिशन के लिए राइट साइड, होल नंबर के एडिशन में। ठीक है, तो हम लोग कितना 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए 5 टाइम्स जंप करेंगे हम लोग। मेक 5 सच जंप्स। 5 times jump we have to do on left side. यस, बिकॉज वी आर सब्ट्रैक्टिंग। अगर यहाँ +5 रहता तो 7 के राइट साइड में जंप करते हैं। देखो फिर से देख लो, अगर हम लोग 7 + 5 कर रहे होते हैं तो ऐसे जंप करते हैं हम लोग 5 टाइम्स। अभी यहाँ पे क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए 7 के लेफ्ट साइड में जाएंगे। Yes, so this is the first jump, second jump, third jump, fourth jump and the fifth jump. So हम लोग कहाँ पे पहुँच गए हैं? Where we reached? 2. We reached the point 2. So we get 7 minus 5 is equals to 2. Any doubt? No sir. Okay. Now subtraction is over. Yes sir. Right. अभी हम लोग डिवीजन करेंगे। ठीक है, Yes sir. Okay, sir. division on the number line. The division of two whole numbers can also be shown on the number line. So let us divide 12 by 3. 12 by 3. Okay. So actual में division क्या होता है? Repeated subtraction. Division क्या होता है? Repeated subtraction. Yes तो sir. हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 12 से स्टार्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करना मतलब कहाँ पे मूव करेंगे? लेफ्ट साइड में।
राइट। और कितने कितने यूनिट्स में मूव करेंगे? 3 यूनिट्स पे एट ए टाइम टू द लेफ्ट साइड। और कब तक करेंगे? जब तक हम लोग 0 तक ना पहुंच जाए। देखो एक बार, सो 12 इज हियर नाउ। 3 यूनिट मीन्स फर्स्ट जंप इज ऑन 12 to 9। देखो, दिस इज द फर्स्ट जंप, सेकेंड जंप, थर्ड जंप, फोर्थ जंप। तो हम लोग अभी 0 पे पहुंच गए। सो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ जंप्स आर देयर? 4. 4, right? So we jump a total of 4 times. That means 12 divided by 3 is equals to 4, 4. right? Sir, Any because any 4 doubt? into sir, because 4 into 3 is 12. Yes. Now we are moving towards the next topic, multiplication on the number line. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? रिपीटेड एडिशन होता है। तो हम लोग जब यहाँ पे राइट साइड जंप करेंगे, ठीक है, डिवीजन में लेफ्ट साइड किए थे, भी मल्टीप्लिकेशन में राइट साइड करेंगे। सो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 होल नंबर्स कैन बी ऑल्सो शोन ऑन द नंबर लाइन। सो लेट अस मल्टीप्लाई 3 into 4। ओके, सो यहाँ पे हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड मूव 3 यूनिट्स एट ए टाइम टू द राइट। इसको 2 तरीके से मूव कर सकते हैं, या तो 4 यूनिट्स एट ए टाइम मूव करो 3 बार, दिस इज वन वे, या 3 यूनिट्स मूव करो 4 टाइम्स। ओके, Yes. सो sir. मेक सच 4 मूव्स। नाउ 0 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट मूव, 3 यूनिट्स का फर्स्ट मूव, 1 2 3 4। कहाँ पे पहुंचे हम लोग? 12. 12. 12. So we get 3 into 4 is equals to 12, 12. right? Yes, sir. Okay, now we are moving towards we are going to solve, try this page number 30. So 4 questions are there. First है 4 plus 5, second 2 plus 6, 3 plus 5, 1 plus 6। तो हम लोग 4 plus 5 के लिए पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट? Sir, from 4. 4, ओके। राइट साइड और लेफ्ट साइड? Sir, left side. नॉट लेफ्ट साइड, वी आर एडिंग Yes, sir. Right. राइट साइड। Right. Okay, so how many jumps we have to do for one 5, unit? sir, 5. Right. Yes, sir, So we 5. are starting from 4. First, second jump, third, fourth, fifth. So we reached at point 9. So 4 plus 5 is equals to 9. Okay, किसी का माइक ऑन है देखो। Now 2 plus 6. For 2 plus 6 again we will draw a number line. Now we will start from Sir, 2. 2. Very good. Now where we have to move, left or right? Sir, we have to move right because it is addition. Right, we have to move towards right. How many jumps? Sir, is 6. 6 jumps. Okay. So 2 से start कर रहे हैं। 1 first jump, second, third, fourth, fifth, sixth jump. We reached at 8. So 2 plus 6 is equals to 8. 8. Right. Now the next number is 3 plus 5. For 3 plus 5, we will start from 3 and we will make how many jumps? 5. Right. So first, second, third, fourth, fifth. We reached at point 8. So 3 plus 5 is equals to 8. 8. Now the next question is 1 plus 6. So we'll draw number line first and we will start from which number? 1. 1. And we will move towards right side because we are going to add, and we will make how many jumps? 6. 6 jumps. Sir, 6. Right. So 1 से start कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 and the last jump. So we reached at point 7. 7. So therefore 1 plus 6 is equals to 7. 7. Okay. Now उसी पेज में in the same page one more try this is given regarding subtraction. So there are 3 questions: 8 minus 5, 6 minus 2 and 9 minus 6 using number line.
So let us Sir? start with Sir, yes. now we have to move at left. Right, very good. So क्योंकि subtract कर रहे हैं, we are subtracting, therefore we are moving towards, we should move towards left side. So कौन से नंबर से start करेंगे? Sir, we have to start at 8. 8. So we are moving towards left side. 3 jump. 1, 2, 3. So we reached at 5. So 8 minus 3 is equals to 5. Now the next question is 6 minus 2. So first we will draw the number line. Now we'll start from 6. 6. So right side move करेंगे कि left side? Sir, left side. Left side, right. So 2 jumps. Minus 2 means 2 jumps. First, second. So answer is 4. 6 minus 2 is equals to 4. अभी last वाला बचा हुआ है 9 minus 6. So first we will draw the number line. Then we will start from 9. क्योंकि subtract कर रहे हैं, that is why we will move towards left hand side. And minus 6 है इसलिए left hand side में 6 jumps करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Last jump. So 9 minus 6 is equals to 3. 3. ये आंसर गलत है, एक मिनट इसको करेक्ट कर लेते हैं. 3. Right. So any doubt in this question? No, sir. Okay. No, sir. Now we are moving towards the next. Try this question, page number 31. This is multiplication. Okay. So 2 into 6, 3 into 3, 4 into 2. So first 2 into 6. So 2 into 6. For 2 into 6, what we have to do? We have to make 2 moves. 2 units. 2 units का 1 move करेंगे at a time. So how many jump we have to do? 6. 6. I repeat once again. We have to jump 2 units at a time. How many jumps? 6 jumps. So we have to start from 0. So this is the first jump. 2 units का. Now second jump. Third jump. Fourth jump. Fifth jump. And the sixth jump. So we reached at 12. So 2 into 6 is equals to 12. Now the next question is 3 into 3. So 3 units at a time we have to go for 1 jump. ठीक है, एक jump में 3 units. How many times we have to jump? Sir, 3 times. 3. Right. We have to start from 0. So this is the first jump, 3 units का. Second jump and the third jump. So answer is 9. 3 into 3 is equals to 9. Okay. So now next question जो है क्या था? 4 into 2. So 4 units का एक jump करेंगे. So how many jump we have to do? 2. So this is the first jump and this is the second jump. So answer is 8. 8. So 4 into 2 is equals to 8. 8. Okay. So this is the last question of today's session. Now we are moving toward the next section, assignment questions. Okay. So first question assignment का predecessor वाला है, second successor. Now addition using number line, subtraction using number line, multiplication using number line, and division by using number line. So these are the questions I will post in the Google Classroom. So that's all for today's session. Thank you very much.